Welcome again students in the class of linear algebra. The inner product space, some definitions, some properties. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पिछली क्लासों में स्टडी कर चुके हैं, उनके बारे में एक जनरल प्रॉपर्टीज़ आप समझिए. Z x plus I by is complex number in which x is real part denoted by real Z and y is imaginary part denoted by imaginary Z. Z conjugate of Z equals to x minus I by symbol. Z के ऊपर लाइन से खींच देते हैं तो कंजुगेट हो जाता है. दोनों को देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी Z प्लस Z कंजुगेट 2x होता है और इट मीन्स दैट 2 रियल Z. सेकंड Z माइनस Z कंजुगेट 2i by and it means that 2i imaginary Z. Imaginary Z means y. Z conjugate means x square plus y square. It means that mode of Z square. That is a property of complex numbers. And if mode Z equals to 0, if and only if x equals to 0, y equals to 0, or conversely, if x equals to 0, y equals to 0, then we can say mode Z equals to 0. And conjugate of complex number equals to Z. And conjugate modulus of conjugate Z equals to modulus of Z. Next property, mode of Z equals to root x square plus y square more than equals to x, or conjugate mode of Z more than equals to real Z. Next, Z1 plus Z2 modulus less than equals to mode of Z1 plus mode of Z2. That is property, triangle properties. And Z conjugate of Z1 plus Z2 equals to Z1 conjugate plus Z2 conjugate. And next, conjugate of Z1 Z2 equals to Z1 conjugate into Z2 conjugate. And 10th property, conjugate of Z1 minus Z2 equals to conjugate of Z1 minus conjugate of Z2. And definition of inner product. Let V be a vector space over the field F of real numbers or complex numbers. An inner product on V is a function from V cross V into F assigning the ordered pair alpha beta in V, a scalar alpha beta in such a way. First property, alpha beta equals to conjugate of beta alpha. अल्फा बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा अल्फा कंजुगेट. और सेकंड प्रॉपर्टी, ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा गामा प्लस बी इंटू बीटा गामा. थर्ड, अल्फा अल्फा मोड अल्फा अल्फा मोर देन इक्वल्स टू 0. इट मीन्स दैट अल्फा अल्फा इक्वल्स टू 0 इफ अल्फा इक्वल्स टू 0, और अल्फा अल्फा मीन्स normal alpha square. Then V is an inner product space with respect to specified product space. That is some definitions about inner product space, and after it we proof form next lecture.